Good morning, everyone. So, in the last video, we have completed the revision of whole syllabus. The first round of revision is over. Now, I hope everyone gets the copy on the first on their WhatsApp. The first round of revision cycles. आपके दो cycles होने फर्स्ट और सेकेंड और हाफ ऑफ सिलेबस दोनों साइकिल्स में आपका आएगा. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर प्री बोर्ड्स. इंस्टेड ऑफ दैट the cycle test are there of 35 marks. So everyone should familiar with the syllabus of the first cycle. So in the first cycle we have a chapter that is a unit, not chapter, a unit of biotechnology. Clear? A unit of biotechnology. So today we are going to revise that unit, and that chapter would be revised in two videos. This is the first video, and tomorrow you are going to get the second video of the biotechnology unit. So let's start with the first question. Insulin produced by recombinant E. coli is biologically inactive unless inactive and useless. Explain why post transcriptional modification is necessary in this case. We know that even in the human body, the insulin molecule is produced as a proinsulin, which is inactive, and but in human body there is a mechanism through which that proinsulin is changes into the active insulin. Clear? But here in the question is that E. coli, a bacteria is there which produce, in which we insert the gene for the of the insulin, but the insulin which is produced by the bacteria is inactive, means that bacteria is producing this proinsulin. ह्यूमंस में भी ये प्रो इंसुलिन ही प्रोड्यूस हो रही है. जो इंसुलिन का डीएनए है वो प्रो इंसुलिन के लिए ही फॉर्म वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रो इंसुलिन होता है. उसके बाद इस प्रो इंसुलिन में मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, और वो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती हैं. यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लेन वाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इज नेसेसरी. तो प्रो इंसुलिन जो है वो क्या बन रहा है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? बट आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन देयर आर नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस, जिसमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज किया जाता है. ठीक है, कुछ रिमूव कर दिया जाता है, कुछ ऐड कर दिया जाता है. तो वो सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में हो रहा है. एंड दैट प्रोसेस इज नॉट that process not occur in the E. coli bacteria. So that's why the insulin produced by the E. coli bacteria is biologically inactive. So I'm repeating the question, that what kind of insulin that bacteria produce? Inactive. It is inactive. But in human body, the after formation of inactive insulin, that is converted into active form. That mechanism is there, but that is not present in the E. coli bacteria. So this is the first question. Moves toward the second question. During gel electrophoresis, two DNA fragments of similar length appear as a single band. So we know that what is gel electrophoresis. Gel electrophoresis is the separation of the molecules. It is a process of separation of different kind of molecules like DNA, RNA, proteins. इनको जो है वो अलग अलग करने की ये जो प्रोसेस है. Now in the gel electrophoresis, two DNA fragments of similar length appear as a single band.
उनकी लेंथ भी सिमिलर है, ठीक है, और साइज भी सिमिलर ही होगा ऑलमोस्ट, और वो एक ही बैंड की तरह, दो अलग अलग ऐसे नहीं हमें दिखते हैं, वो हमें ऐसा दिखता है. सो वाई दिस हैपन्स, ये क्यों होता है, इसके जो पीछे का कारण है दैट लाइक हियर इट इज़ अ apparatus where gel electrophoresis occurs. So here a molecule A and molecule B, तो इनकी जो लेंथ है मतलब उनका साइज भी सेम ही है, ठीक है. तो ये जो सेम साइज है ये एक साथ ही मूव करता है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ मूव करते हैं. तो जैसे ही ये साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है, तो ये सिंगल बैंड अपेयर होगा. बिकॉज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज़ द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. Here the separation, when separation occurs, so the movement of the molecule occurs according to its साइज, वो उसके साइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी. तो अगर इनका साइज ही सेम है तो ये एक साथ ही मूव करेंगे. और बिकॉज डीएनए बहुत छोटा, मतलब कि उसका लेंथ बहुत बड़ी होती है लेकिन देखने में हमें नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, तो वो हमें जब ये पास पास होते हैं, ठीक है, तो हमें ये एक सिंगल बैंड दिखता है. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ देयर साइज दे मूव टुगेदर और अपेयर एज अ single band. What is this is the reason behind that. Now suggest one method to resolve this issue. तो इसके लिए हम हाई रेजोल्यूशन वाली जेल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ हाई रेजोल्यूशन जेल्स, जिसमें पॉली एक्रेलिक जेल्स आती हैं. आपकी बुक के ऊपर एक वर्ड दिया होगा पेज. पेज, दिस इज यूज ऑफ polyacrylic gel electrophoresis. Means polyacrylic gel electrophoresis, this is actually a method to solve this problem. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी ये पूछ सकते हैं. क्लियर? So this is the second question where we learnt about the gel electrophoresis technique. So that is a technique which is given in the chapter, and in this technique we done to we separate the molecules of DNA, RNA and proteins. Moves to the next question, that is a diagram based question of the chapter. Here we given a diagram that shows plasmid. So this is the plasmid. So first we should know about what is plasmid. So what is plasmid? Anyone? So plasmid is a extracircular DNA which is present in the bacterial cell. So this is the bacterial cell. तो सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होगा जो मेन डीएनए होगा, और न्यूक्लियोइड के साइड में ही यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए भी होगा जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं. ठीक है. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड इज गिवन वेयर दे हैव गिवन ampicillin resistance gene, ECOR R1, H hind 3 and ORI is there. We have done all these parts. What are ECOR 1, what is HIM 3, ampicillin resistance gene क्या है, ORI क्या है, we know all about that. Now on the basis of that we have two questions, that which component ensures independent replication, and we know that what is first of all tell me what is replication. Now the replication is this word, the replication means to form a replica. So here we have a single DNA molecule, and through the process of replication it divided into two parts. रेप्लिका मीन्स उसकी कॉपी फॉर्म हो रही है. क्लियर?
So if which component ensures independent replication? So here the component is ORI, origin of replication. इसके लिए word use करते हैं हम ORI, origin of replication. What does it means? Origin of replication, ORI, that is responsible for the replication process in the plasmid. Next question is how we can identify the recombinants. Now the whole purpose behind the uses of this plasmid is that we want to make a recombinant DNA. Clear? We want to make a recombinant DNA, and the DNA in the organism in which the recombinant DNA is present is known as recombinant organism, और DNA को भी recombinant DNA बोलते हैं. तो for the recombinant or the process of recombination, what we have in this plasmid that actually forms the recombinant? What we have? Anyone? We have these sites. This amphicycline resistance is एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. इस जीन की वजह से क्या है, जितनी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं, चाहे वो एम्पीसिलिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो, ये एक्चुअली में क्या करती है कि इस बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होगा, उसे एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस बना देती हैं कि उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा. बट इन द केस ऑफ रिकम्बिनेशन, द फॉरेन डीएनए, जो बाहर से हम डीएनए डाल रहे हैं, वो डीएनए यूजुअली कहाँ पे जाता है, इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे जाता है. तो मींस जिसके अंदर फॉरेन डीएनए होगा उसके अंदर ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? होगी? नो. उसी जीन की जगह पे वो फॉरेन डीएनए जो है वो आ गया है. तो क्वेश्चन है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रिकम्बिनेंट्स. वी कैन आइडेंटिफाई बाय चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ means antibiotic resistance gene or not. If that is present, means there is the recombination or there is no foreign DNA is entered in the plasmid. And if this amphicycline resistance gene is not there, means if that piece of DNA is not able to survive in the amphicycline antibiotic, means the recombination occurs. Next question is DNA fingerprinting is widely used in forensic science. फोरेंसिक साइंस में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी एग्जाम एप्लीकेशन होती है यहाँ पे. एक्सप्लेन हाउ VNTRs मेक दिस टेक्निक रिलायबल. VNTRs, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ये वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो बार बार क्या कर रहे होते हैं, किसी भी डीएनए के अंदर या किसी भी जीनोम के अंदर बार बार क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं. क्लियर? और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी का डीएनए किसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है और किसके साथ नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझें, तो अगर फादर और सन का डीएनए हम देखेंगे तो उनके अंदर सेम उसी पोजीशन पे यही VNTRs प्रेजेंट होंगे क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा क्लोज है. क्लियर? यही फादर का डीएनए मदर के साथ मिलके सन के अंदर आया है. क्लियर? तो उन्हीं पोजीशंस के ऊपर क्या होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होंगे. ठीक है? और अगर कोई दो पर्सन्स हैं जिनका डीएनए नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर क्या होगा, ये VNTRs जो है वो एब्सेंट, मतलब कि उन सेम पोजीशन पे वो रिपीट अपने आप को नहीं कर रहे होंगे. सो दिस इज हाउ दिस टेक्निक इज रिलायबल, दैट VNTRs are the segments which are present in the humans
ह्यूमन जीनोम्स, ठीक है, जो कि दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर particular interval, and two related DNA have similar position and similar kind of VNTRs.